नमस्कार। एसएमई एक्सप्रेस में हम माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को सपोर्ट करने के लिए अलग अलग थीम्स पर सेशंस करते हैं। जैसे अभी एमएसएमई डे रहा है, ऐसे में हम इस बार के सेशन में स्पेस की लीडिंग वॉइसेस के साथ मिलकर नए दौर के लिए एमएसएमईज की तैयारियों पर मंथन करेंगे, ट्रेंड्स को समझेंगे और नए अवसरों को लेकर कैसे आगे बढ़ना होगा इसका जायजा लेंगे। हमें आज के सेशन में ज्वाइन कर रहे हैं अर्नब चक्रवर्ती, डायरेक्टर इंडिया यूएन's एमप्रोटेक्ट प्रोग्राम, लक्ष्मी वी वेंकटेशन, फाउंडिंग एंड मैनेजिंग ट्रस्टी, भारतीय युवा शक्ति ट्रस्ट BYST, और साथ ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं गुरमीत सिंह कुल्लार, प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन फीको। आप सभी का शुक्रिया, थैंक यू। आइए बातचीत के सिलसिले को शुरू करते हैं। अर्नब साहब, पहले आपके पास आएंगे। अर्नब, जिस तरह से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के इस दौर में एमएसएमईज भी इस राह पर आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में आपका इसको लेकर क्या आंकलन है? Digitalization is about looking at the strategy overall, understanding how is it that a broader transformation of my processes, of my systems, of my enterprise as a whole, of workflows, for example, could be put into a way so that systems and processes talk to each other. And I believe many SMEs confuse the two terms. However, over the last 10, 12 years, since the government, for example, has been taking quite a few proactive steps in digitalizing customer, public records. For example, the Aadhaar process has been a huge digital movement in the country, which now lends to due diligence across various platforms. Various services are being offered on the basis of such due diligence, etc. So people are becoming more and more aware of the benefits of digitization and digitalization, both. लक्ष्मी जी, देखा जाए तो एमएसएमईज में ज्यादातर माइक्रो उद्यमी हैं। ऐसे में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स कैसे सपोर्ट की उम्मीद कर रहे हैं? Our survey shows that only 40% of micro entrepreneurs even have a minimum rudimentary knowledge of what digital technologies are, how to adapt them, and how to really utilize them. They may be on WhatsApp or they may be watching some movies on their screen, but that doesn't amount to being able to do business on it. In fact, recently an Oxfam study showed that nearly 60% of the rich Indians are 4 times more likely than the poorest 40% to use digital payment and so on and so forth. And the interesting part of it is that even our survey says that very often they do not adopt these technologies because they're not even aware of it. Or if they're aware of it, they're not clearly cognizant of what the benefits are. So I would say that a great deal has to be done in order to raise the awareness and in order to support them to adopt the technologies. A lot may exist out in the space out there, literally in this case in cyberspace, but the ability of a micro entrepreneur to adapt and adopt it for their own needs, there is a big gap. गुरमीत जी, जैसे यूएन एमप्रोटेक्ट ने अपना व्यू पॉइंट दिया, लक्ष्मी जी ने भी अपने सर्वे के बारे में बताया है, वहीं आप हमें लुधियाना की जमीनी हकीकत के बारे में बता सकें। आपका शहर एमएसएमईज का एक प्रमुख गढ़ है, आपके यहाँ कई ट्रेडिशनल यूनिट्स काम कर रही हैं, उन्हें किस तरह के सपोर्ट की जरूरत है? थैंक यू सौरभ जी। अगर बात करें हम डिजिटलाइजेशन की और डिजिटाइजेशन की, आज जो माइक्रो लेवल पे जो लुधियाना है उसकी बात करते हैं तो लुधियाना इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। बट जो माइक्रो मेंबर्स हैं वो अभी डिजिटलाइजेशन की तरफ नहीं उतना बढ़े हैं। ओनली वी कैन से 15% ऑफ MSME मेंबर्स जो डिजिटलाइजेशन की तरफ पर बढ़े हैं। बाकी मेंबर्स के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो डिजिटलाइजेशन और डिजिटाइजेशन की तरफ चल पड़े। सिर्फ उन्होंने एक काम किया हुआ है कि कहीं छोटा मोटा रेस्टोरेंट में जाना है या कहीं वो गूगल पे कर दिया। बट एज फार एज देयर अकाउंट्स आर मेंटेन्ड और जो पेमेंट करनी है उन्होंने, उसकी तरफ अभी माइक्रो मेंबर ना तो इतना अवेयर हैं और ना ही उन्होंने इसको अभी अडेप्ट किया है। सिर्फ कोविड के बाद कुछ लोग जो माइक्रो लेवल पे थे उन्होंने इसको अडेप्ट किया है। अभी माइक्रो लेवल पे बहुत ज़्यादा मेंबरों को
इसकी अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है। लक्ष्मी जी, जिस तरह टेक्नोलॉजी एक एनेबलर है, पर कई बार यह शायद डिवाइडर का काम भी करते हैं। जैसे आपका सर्वे एक गैप की बात करता है, ऐसे में कैसे स्टेप्स की जरूरत है ताकि स्मॉल बिजनेसेस कहीं पीछे ना रह जाएं? We are looking literally at how do you go about supporting the digital efforts of the grampreneurs, literally people in the small towns and rural areas. And you can literally divide the issue into three specific areas: digital presence, digital payments, and digital commerce. If you look at digital presence, it's simply a question of, can you make your small business, a micro entrepreneur, the fact that you exist, can you make your presence be known? And this can be done simply through the social media that you use for your own personal interactions, like Facebook or Instagram, and so on and so forth. Many of our entrepreneurs can be enabled to be on Facebook, and particularly if it's in the local vernacular language. But the question is, how do you present your business? How do you put like a storefront, a digital front on the system? And things like Google Maps, can you place your business so that if somebody wants to locate you and come to where you are? This is particularly important for the retail businesses and the service businesses. Can people find you? So can you put yourself on the Google Map? The other thing is then the question of digital payment. As Mr. Gurmeet earlier said, if you go to a small dhaba, you may be able to do a Google Pay or an ePay of some kind. But the point is, can you be able to make all your transactions so that you can have a QR code, you can have a UPI apps, and so on and so forth. And equally important is not what the MSMEs can do, but what are the service providers, like banks. They've been talking for a long time about net banking, and you and I may be able to access the net banking. But as far as the micro entrepreneur is concerned, can he apply for a loan? During the COVID, they said they could. Many of our entrepreneurs found that they put their application in, but then the bank said, come and speak to us in person. And when the bank, of course, were closed, so very often the actual application did not go through at all until things cleared and people were able to meet face to face. So it's the service providers too who have to be enabled and who have to come forward to support the micro entrepreneurs. Last but not the least is the digital commerce. Digital commerce, very often we think in terms of large scale commerce. These are all things where not only awareness but education, mentoring, as well as support system has to be given so that the digital presence, payments, and commerce can all be engaged in by the micro entrepreneur. अर्नब, इस तेजी से बदलते दौर में एसएमईज को फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशंस बनने के लिए कैसे कदम उठाने होंगे? Okay, it's interesting that you're talking about future-ready organizations here. There is a fallacy with respect to reading too much into the future. This also makes us fairly anxious and nervous and take hasty, sometimes uninformed decisions, and also takes away the confidence that our customers may have in our ability to deliver in the here and now. So remember, our customers are not in the future. They're in the here and now. So the demand will always continue to be here and now. None of us are really certain of what the future may hold. I mean, about 5 years ago, we wouldn't have imagined that digital transformation in the country would have happened in the way it's happened today. So in my view, business owners may need to focus and build capacity for the present at all times. And how do we do this? I think we can do this by keeping ourselves relevant to our customers at all times and investing in processes and input rather than on outcomes. So for example, instead of focusing on sales and profitability, both of which are outcomes, perhaps I should be focusing on quality feedback mechanisms, both from customers as well as from my suppliers. Perhaps I should be focusing on making quality decisions and judgments, both at an individual and at enterprise or organizational levels, strengthening that. Perhaps I should be focusing on bringing in a culture of entrepreneurship in my organization so that people are more alive and conscious of changing environments, not knowing what the future may hold. गुरमीत जी, जैसे अभी अर्नब ने कैपेसिटी बिल्डिंग और क्वालिटी फीडबैक मैकेनिज्म की बात कही है, आपका क्या मानना है कि एमएसएमईज अपनी यूनिट्स में कैसे क्वालिटी कल्चर के लिए कदम बढ़ाएं? सौरभ जी, इस पे ऊपर सबसे बड़ी बात जो है
जितनी देर तक स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट नहीं होगा। अगर हम बात करें साइकिल की, आज जो साइकिल का कोविड में जो बूम था, आज जो साइकिल इंडस्ट्री है वो बॉटम लाइन पे चल रही है। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट नहीं हुआ, तो मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट मिल रहे हैं। आज सबसे पहले स्टैंडर्डाइजेशन होने की ज़रूरत है। अगर प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो जो एक माइक्रो लेवल है वो अपग्रेड हो जाएगा, क्योंकि एवरीबॉडी हैव टू मेक दैट क्वालिटी विच इज स्टैंडर्ड। सो जब वो चीज मार्केट में आएगी तो एक तो कंपटीशन बहुत बढ़िया ढंग से होगा, और जो प्रोडक्टिविटी है, वो जो प्रोडक्ट, आज हम ऑटो सेक्टर की बात करें, आज हम फोर व्हीलर की बात करें, हमको कहीं ऐसा व्हीकल नहीं मिलता कि वो सेम व्हीकल उससे बहुत कम प्राइस में मिल जाए। क्यों? आज ऑटो इंडस्ट्री और जो टू व्हीलर इंडस्ट्री है वो आज भी बूम पे है। आज भी उसकी डिमांड जो है, और सप्लाई, डिमांड और सप्लाई चेन में दोनों में डिफरेंस है। तो आज स्टैंडर्डाइजेशन करने की बहुत बड़ी जरूरत है। माइक्रो और स्मॉल जो एंटरप्रेन्योर्स है, गवर्नमेंट ने रैंप स्कीम तो ले आए, रेजिंग एंड एक्सेलरेशन एमएसएमई परफॉर्मेंस, बट अभी तक वो ग्रास रूट पे ही नहीं आई, अभी तक उसकी इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हुई। हाउ वी कैन रेज एंड एक्सेलरेट एमएसएमईज? जितनी देर तक हमको एक वाइट पेपर नहीं मिलेगा तो द एमएसएमई सेक्टर कैन नॉट इम्प्रूव दैट। ओनली प्रोग्रेसिव स्मॉल स्केल और एसएमईज कैन इम्प्रूव और अपग्रेड। लक्ष्मी जी, इस दौर में जब जोर सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग पर है, ऐसे में आप मानते हैं कि एमएसएमईज को भी इस पहलू को गंभीरता से लेना होगा और जरूरी कदम उठाने होंगे? I would not like to put the burden on the micro entrepreneurs, because if they are not able to operate in a sustainable manner, please tell me whether they are getting the loans on sustainable manner, whether they are getting the inputs on a sustainable manner, whether the environment and the ecosystem is supporting them on a sustainable manner. Only then they can operate. I would say that if you look at whether it is quality or whether it is adoption of ESG principles, and or even of digitization, I think there are two things that are needed: a mindset and a skill set. The mindset requires awareness building and education. Skill set means you have to give them continuous training, upgrading skills, mentoring them, giving them incentives to adopt digital technology and ESG good practices. Without that, they are literally battling for their day-to-day life. अर्नब, स्मॉल यूनिट्स को ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग को लेकर कैसे इंकरेज करना चाहिए? क्या कुछ इंसेंटिव्स देने होंगे? I would think sustainable manufacturing, clean and green manufacturing is its own reward. And if one moves towards adopting certain practices that are clean and green, one should be doing it for two reasons. One is there is competitive advantage in doing this, and that one can continue to, fend off competition in terms of pricing, in terms of quality standards, etc., and something that the customer might have a distinct preference for. That's one. And the second is that I think it becomes important for an entrepreneur to realize his or her commitment to the environment. Then I think that this consciousness, mindset, if you will, is something that could help the entrepreneur in adopting clean and green technologies without really looking for incentives. Incentives is a good thing, but it can be a double-edged sword. It can make you complacent. गुरमीत जी, आजकल ओवरसीज बायर्स बैक एंड चेन के पहलू पर भी काफी चेक्स रखते हैं। ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग को एमएसएमईज में कैसे प्रमोट करना होगा, आपका क्या मानना है? सर जी, मैं ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग के बारे में अगर बात करूं तो उसमें सबसे बड़ी बात आ जाती है आज सोलर एनर्जी, दैट इज ग्रीन एनर्जी। तो जो गवर्नमेंट है वो इसको बहुत कम प्रमोट कर रही है। although we will talk about the central government और the state governments, हर साल डिक्रीज कर रहे हैं वो, कि लास्ट ईयर था कि जितना आपका पावर कनेक्शन है उसका 70% आप सोलर पावर लगा सकते थे। अभी गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल से न्यू नोटिफिकेशन ले आए हैं तो उसको 63% कर दिया। तो कभी आज से 5 साल पहले ये 95% था। तो दे आर
डिमोटिंग जो ग्रीन एनर्जी है, अगर एक माइक्रो लेवल पे एक 20 किलोवाट का कनेक्शन है तो मैं बात करता हूँ वो सिर्फ 12 किलोवाट ही लगा सकता है। तो गवर्नमेंट शुड एटलीस्ट जो माइक्रो है उसको 100% अलाउ होना चाहिए टुवर्ड्स द ग्रीन एनर्जी। सेकंड वन, मैं बात करता हूँ वाटर पोल्यूशन की। आज सीएफसी की बहुत बड़ी जरूरत है माइक्रो लेवल पे। तो अगर सीएफसी कॉमन फैसिलिटी सेंटर लग जाता है तो उसमें से हम जो हैजर्ड वेस्ट निकाल रहे हैं उसकी बजाय अगर हम उसमें से निकल और क्रोम रिकवर करें तो बहुत बड़ी बात है। तो अगर ये ओवरहेड जो वर्क है ये गवर्नमेंट अपनी लायबिलिटी ले ले तो माइक्रो सेक्टर को टेक्नोलॉजी की तरफ आना पड़ेगा ताकि वो टेक्नोलॉजी लाएं जो टेक्नोलॉजी आज वर्ल्ड वाइड है। तो आज माइक्रो लेवल पे वो टेक्नोलॉजी भी नहीं मिल रही। अगर वो टेक्नोलॉजी मिल जाए तो मैं लुधियाना की बात करता हूँ, इट इज़ ए मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। टेक्नोलॉजी नेवर रिप्लेस एंटरप्रेन्योर्स बट द एंटरप्रेन्योर्स who use that technology, new technology, will replace entrepreneurs who do not. हम फिलहाल ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, हम जल्द लौटेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस। हम इस बदलते दौर में एमएसएमईज की तैयारियों पर फोकस कर रहे हैं। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लक्ष्मी जी, आप बता सकें, जहां एक तरफ डिजिटल अडॉप्शन तेज रफ्तार से हो रहा है वहीं साइबर अटैक्स में भी इजाफा देखा जा रहा है। आप मानते हैं ऐसे में इस पहलू पर भी एसएमईज को सपोर्ट और हैंड होल्डिंग की जरूरत होगी क्योंकि यह एक बड़ा खतरा है। Cyber attack is a phenomenon that is barely understood even at the level at which mass technology is being deployed by larger organizations, leave alone the small micro entrepreneurs. Very often, when there's a phishing attack or there's a malware and they are spurious data is being thrown into their system, they're not even aware of it because, frankly, from their perspective, it is very difficult for them to be able to differentiate because for the first time they are taking their processes and maybe digitizing them. So for them to differentiate between what is real and what seems to be like an attack itself is a challenge. So I would say, yes, cyber attack is definitely an issue in each and every aspect of what we do, and including the micro entrepreneurs. But perhaps before that, we need to educate them as to what is an attack. When do they even know they're being attacked? Very often they give away important data. Somebody says, with a big flash that you're winning something, or a bank is offering you a loan, or somebody is giving you a discount on some product. The immediate tendency for all of us, leave alone the micro entrepreneurs, to click on it. So very often, I think once again comes back to the issue about how much we are able to educate the micro entrepreneur about what is good practices and what is not so good practices. But as a corollary to this, I would also like to add before we end that the question about, you had raised a lot of issues on the environmental aspect of it. The ESG refers to environmental social governance. Have we really looked at the social aspect of the governance? How much are the micro entrepreneurs? Their contribution to the social aspect of it is humongous. They are the ones who are using local resources, local local people, and to create local products for the local markets. अर्नब, आप एमएसएमईज के लिए मल्टीलिंगुअल इंटरनेट को कैसे देखते हैं, यानी ईमेल्स और वेबसाइट्स उनकी नेटिव लैंग्वेज में? Well, the internet is already multilingual. Various applications such as Facebook and WhatsApp work on multilingual platforms already. So whole websites can actually be translated into a range of languages. And now with artificial intelligence coming in, there's a good amount of transliteration rather than translation, which is also happening, which I think is a very good thing. Now, I think more than speaking about a language or reading about a language, what we need to focus on is communication itself. I can communicate without language. I can communicate my happiness, for example, or my unhappiness with a negotiation with you, for example, without saying a single word. So in communication, and this is something that the United Nations program, the Improtech program that I happen to be working with,
works with are three distinct elements. There is ethos, there is pathos, and there is logos. Ethos is about credibility. How credible am I as I'm putting out a communication? How truthful and how trustworthy am I? So that's one. Pathos. Now, pathos is about how do I feel and how do I empathize with you as I communicate with you. That's important as well. And then there is logos, which is about wisdom and the knowledge that goes into the communication. So more than multilingual websites, business owners may use ethos, pathos, and logos. गुरमीत जी, चलते चलते आप एमएसएमईज को क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं सौरभ जी इस पे बात करूंगा एमएसएमईज को भी और गवर्नमेंट को भी। अभी अगर हम बात करें कि विद इन 7 months to 8 months the rate of interest is increased by 3.5%, which is a huge burden on the MSMEs. तो गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए कि जहां पर एमएसएमई ज्यादा है तो वहां पर एमएसएमई बैंक को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है, क्योंकि बिकॉज ऑफ जहाँ बैंक्स काम करते हैं तो वहां पर जो स्मॉल और मीडियम भी आ जाते हैं। हम चाहते हैं कि जो माइक्रो और स्मॉल लेवल है एमएसएमई के लिए स्पेशल बैंक्स क्रिएट करने की जरूरत है। जो मैं एमएसएमईज के लिए बात करूंगा कि आज अगर एमएसएमईज ने आगे बढ़ना है तो उनको जो न्यू स्टार्टअप्स हैं उनकी तरफ बढ़ना होगा। आज हम जो ओल्ड टेक्निक से काम कर रहे हैं वो एब्सोल्यूट हो जाएगा थोड़ी देर में, अगर हम उसको न्यू इन्वेंशन और न्यू इनोवेशन पे काम ना किया। तो आज हमारी एमएसएमईज को सबसे बड़ी जरूरत जो है वो इनोवेशन पे है। तो अगर हम इनोवेशन पे आते हो तो नेचुरली न्यू प्रोडक्ट्स आएंगे, न्यू स्टार्टअप्स आएंगे। although the out of 100 approximately 85% startups failed, but जो 15 startups आते हैं that will prove to be a turning point in MSME sector. So that is need of the hour. So it will both the government and as far as the MSCs तो वो ग्रो करेंगे। एसएमई एक्सप्रेस के इस सेशन में फिलहाल इतना ही। हमें ज्वाइन करने के लिए अर्नब चक्रवर्ती, डायरेक्टर इंडिया, यूएन्स एम्प्रीटेक प्रोग्राम, लक्ष्मी वी वेंकटेशन, फाउंडिंग एंड मैनेजिंग ट्रस्टी, भारतीय युवा शक्ति ट्रस्ट BYST, और गुरमीत सिंह कुल्लार साहब, प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन फीको। आप सभी का शुक्रिया, थैंक यू। अगले एडिशन में मुलाकात होगी एक नई थीम के साथ। फिलहाल नमस्कार।